Hello there guys, this is Tausif Ahmadan. I'm your Warangal biker from Warangal. So today we are going to review the best 500cc motorcycle in the Indian market. Well, it is the Honda NX 500. So let's start reviewing this impeccable motorcycle. The closer you got to me, the faster I try to leave. Like a mirage, like a mirage. The scars that you know I keep on my arms, I appear empty. Like a mirage, like a mirage. So this mean looking motorcycle from Honda is powered by a 471cc liquid cooled DOHC engine which has a 6-speed gearbox, and it is an amazing motorcycle for those who are ravenous to explore some unexplored places or touring. And the weight of this motorcycle is around 195 to 196 kgs, and one of the biggest strengths of this motorcycle, as it is predominantly focusing on touring, its tank is 17.5 liters. And as you can see, this bike has got all LED equipment, right? आपको इसको LED headlamp मिलता है, LED indicators मिलते हैं, and another good thing is that you get an adjustable brake lever here, right? As you can see. However, you don't get an adjustable clutch lever here, and the suspension of this motorcycle is from Showa, as you can see, right? यहाँ पर I hope you're able to see, right? Talking about the acceleration of this motorcycle, man, I was so impressed that I was able to do 0 to 100. I felt it was within like 5.7 seconds. So logically, yeah, it can do 0 to 100 within 5.7 and 5.6 seconds. It depends on the perfect timing of the acceleration, right? And a top speed probably somewhere around 185 or so. I was able to do like 140 in the फिफ्थ गियर, ओके, बट यहाँ पर रोड थोड़ी ट्रैफिक रहने से आई वॉज नॉट एबल टू लाइक डू मोर स्पीड. ओके, उसके साथ साथ ना यहाँ पर ये बाइक को ना एक अच्छा फीचर मुझे ये दिखा कि फिफ्थ गियर में भी मैं 50 की स्पीड चलाए तो बाइक जर्क्स नहीं ले रही है. सो देयर इज़ नो जर्किंग एट ऑल, राइट? एंड इसका एग्जॉस्ट जैसा आप देख सकते हैं थोड़ा अपस्वेप्ट है. अगर आप वाटर्स में अगर चलाएंगे तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. So many people might have a doubt that what is the cruising speed of this motorcycle. Well, ये आपके प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने बाइक को आज 70 किलोमीटर चला है. तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो आप फिफ्थ गियर में 100 to 110 आराम से पूरा दिन चला सकते हो, और सिक्स्थ गियर में 120 to 130 पूरा दिन चला सकते हो. लेकिन स्पीड वायलेशंस नहीं करके आपको कम स्पीड ही मेंटेन करने में भलाई है. जैसा आप देख सकते हैं, ये ख़राब रास्ते पर मैं Honda NX 500 को चलाते हुए आया हूँ. एंड इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका सीटिंग पोस्चर अपराइट रहने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड टर्निंग रेडियस की जब बात आती है तो इट्स लेस. मेरे पास डोमिनार 400 थी पहले, उसका टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा था, बट इसका काफ़ी कम है. एंड इसके मिरर्स की जब बात आती है तो पीछे का सब कुछ दिखता है, मतलब द एवरीथिंग बिहाइंड यू इज़ क्लियरली विजिबल, क्योंकि ये आईने ना काफ़ी चौड़े हैं. सो ऑफ रोडिंग भी ये बाइक हल्के से अच्छे से कर लेती है, मतलब ऐसी ऑफ रोडिंग. हार्डकोर मैं तो बोलूँगा कि नहीं, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस एक थोड़ा इश्यू हो सकता है. सो व्हेन इट कम्स टू touring capability of this motorcycle, you can easily do 900 to 1100 kilometers in a day on this motorcycle, and overtaking is very easy on this motorcycle because you have a 6-speed gearbox, right? You have a 500cc like parallel twin engine, so बहुत ज़्यादा पावर होता है. तो ओवरटेकिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज मैंने लाइक हाईवे पे ना बड़े बड़े कार्स को ओवरटेक किया ये बाइक से. इट्स वेरी इजी. So the front suspension travel of this motorcycle is 150 mm and the rear is 135 mm. So that's actually like good when you're willing to tour on this motorcycle. And the brakes, okay, the earlier model, I mean the CB500, right, used to get
a single disc in the front, but this one gets a dual disc. It's 296 mm and the rear one is 240 mm. So trust me, when I was riding this bike, man, ये bike का stopping power बहुत ज़बरदस्त है. And you know the top speed of this bike is somewhere around 183 to 185 kilometers an hour, right? And यहाँ पर ना हमको seat height जब ये bike की बात करते हैं, so the seat height of this bike is around 830 mm. So my height is around 5'10.5", so I was able to like flat foot on this motorcycle, but people of average height, just like 5'7" and 5'8", might be a bit tiptoeing. Okay, and यहाँ पर हमको ground clearance की जब बात आती है, so it's 181 mm, all right, and the overall weight of this bike is 195 to 196 kgs, like I said. And another good thing about this motorcycle is that you get like a dual cylinder engine, parallel twin, and इसको dual barrel exhaust type का आता है. And the rear tire is around 160 mm, and the front I think it's like Dunlop के टायर्स आते हैं, and ये 110 mm का है, 19 इंच का रिम है, and पीछे आपको 17 इंच रिम मिलता है. So you know, proceeding with the other few things about motorcycle, इसका mileage, काफ़ी लोग like they are skeptical about its mileage, right? So this bike's mileage is somewhere around 26 to 28 kilometers per liter overall. So you know, for a 500cc motorcycle, it's really good, right? And the looks of this motorcycle, you know, they are just impeccable, man. I mean, जब भी मैं चला रहा था ना, I was getting a lot of attention, right? And यहाँ पर you get like a side stand engine cutoff feature, right? And swing arm, okay, like मेरे को aluminium ही लगता है, maybe box section हो सकता है, maybe it's made up of aluminium, right? And इसकी जब exhaust note की बात आती है, तो मैं भी आपको इसका exhaust note सुनाऊंगा. And you get a TFT display here, right? And अभी मैं आपको इसकी exhaust note सुनाऊंगा. You get numerous features, right, in the instrument cluster, and आपको यहाँ पर ना traction control का switch एक dedicated मिलता है, and यहाँ से आप अपने like trip meter सबको manage कर सकोगे, just like the Honda CB350 RS, but this is like more modern, right? And horn ठीक है, लेकिन you can even get an aftermarket one installed. Okay, so proceeding with the exhaust note, you also get like a hazard switch over here, right? Let's start the motorcycle. Man, this is something just amazing. मैं भी आपको इसको रेव करके सुनाऊंगा. And that is something really amazing, you know. काफ़ी refined है motorcycle, and आज मैंने जब इसको चलाया था, I reached the top speed of like 140 in the 5th gear, and road काफ़ी चौड़ी थी, लेकिन I didn't feel कि I have to like go further, right? काफ़ी बेहतरीन मोटरसाइकिल है. and इसके फुटपेक्स जब बात आती है, so they are like quite rear set, okay, बहुत ज़्यादा भी नहीं, so it's like a touring friendly motorcycle honestly, right? And आपको one thing जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि this bike is like predominantly meant for touring, right? And अगर आप कुछ अच्छे हाईवेज पर चलाओगे तो you're gonna enjoy this motorcycle to the core. हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत ऑफ-रोडिंग भी कर सकते हो, बट नॉट हार्डकोर, बिकॉज इसका ग्राउंड क्लियरेंस इज अराउंड 160 181 mm, राइट? सो डिसेंट है, बट आपको काफ़ी हार्डकोर ऑफ-रोडिंग नहीं करना है. एंड हियर यू हैव द रेडिएटर, एज यू कैन सी आगे, राइट? एंड पूरा आपको LED मिलता है यहाँ पर, ऑल राइट. एंड ट्रस्ट मी, द ब्रेकिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल वाज जस्ट सो पावरफुल. 90 to 100 की स्पीड पर भी बहुत ही आराम से बाइक कंट्रोल हो जाती है. एंड one more thing about this motorcycle is that हाँ, आपको NX 500 बोलकर कहीं एविडेंटली लिखा हुआ नहीं होता है, बट आप देख कर ही पहचान ले सकते हो, बिकॉज ड्यूअल फ्रंट डिस्क्स, इसकी लाइक फ्लैट फेयरिंग होती है फ्रंट पे, राइट? क्वाइट रेमिनिसेंट टू दी Honda CB200X. दोनों थोड़ा बहुत सिमिलर है दिखने में. एंड ये बाइक में आपको असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी मिलता है, which is going to aid in super smooth clutch operations, and this combined with Honda's refined engines, man, it's going to make riding even more enjoyable. So a showroom price of this bike here in Telangana is somewhere around 5.9 to 5.95 lakh, and I think its on-road price should be somewhere around 7.3 to 7.4 lakh here in Telangana. The price may vary, okay, kabhi bhi change ho sakta hai, kam bhi ho sakta hai, zyada bhi ho sakta hai. So if you like this review,
Do subscribe to my channel for more upcoming videos, and ride safe. God bless and take care. Goodbye.